ప్రభుత్వమే పార్లమెంట్లో చర్చ జరగకుండా అడ్డుకుంటోందని ఆరోపించాయి ప్రతిపక్ష పార్టీలు. ప్రతిపక్షాలను ప్రభుత్వం మాట్లాడనీయడం లేదన్నారు. చర్చ జరిగితే ఎవరు తప్పో ఎవరు ఒప్పో అనేది ప్రజలకు తెలుస్తుందన్నారు ప్రతిపక్ష నేతలు. Democratic system is now going under threat. Only to resist that Rahul Gandhi will not be allowed to speak, and for which whole ruling party is opposing to run the house smoothly. It was decided, it was concluded by discussion that debate will start, opposition पार्टी शुरू करेंगे, उसके बाद सरकार की तरफ से भी उन्होंने बोल सके. अचानक हम लोगों ने सुना कि बोलते हैं कि एक प्रचार चल रहा है कि राहुल जी बोलेंगे, उसको बाद हाउस नहीं चलने देंगे, इसीलिए बीजेपी को आगे बोलना देना होगा. क्या बात है? अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसेस, ऑपोजिशन लीडर और ऑपोजिशन पार्टी सबसे पहले कहेंगे ये सरकार राजी हो तो कल भी हम लोग ये विषय पर बहस करने के लिए तैयार हैं. Indian Parliament that 16 parties has come together against this demonetization. You see that the Prime Minister is accountable to this Parliament. He is an elected Prime Minister, and we the MPs are accountable to the people. You know that the Prime Minister is not ready to come in the Parliament. He has the time to visit almost all the nations. You know that in the time of the Lalit Modi issue, we have been taking this issue, that he hasn't come, he hasn't said even a word with regard to that issue. Here also, this issue is concerned with the crores and crores of people. Every day we are getting such information. लोकसभा के इतिहास में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है. हमेशा ये होता था कि अपोजिशन की तरफ से इश्यू उठाए जाते थे और सरकार कोशिश करती थी कि सदन चले, लेकिन यहां पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये प्रयास हो रहा है, ये साजिश हो रही है कि किसी तरह हाउस नहीं चलना चाहिए और नोटबंदी को लेकर जो विपक्ष एक बार यूनाइटेड होकर, एकजुट होकर जो सारी चीजों को सामने रखना चाहता है, देश के सामने रखना चाहता है, लोकसभा के माध्यम से उसको रखने नहीं दिया जा रहा है. ये किस बात का डर या खौफ है, इस सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है.